Namaskar to everybody. This is a recording for something called a financial plan for a young professional. So, this was made out of a lot of discussion which took place with the daughter of a very old 50-year-old friend of mine. So, उसी के लिए I thought, okay, let me make a recording and make PPT so that more people can share and learn about it. So, this is it. This will go into a lot of different sections and plans because I don't think that the full thing can be covered in just one presentation of 20-30 minutes. So let's start. So the person is a child or a daughter of my very old friend, age about 30, very smart IT professional. My guesswork is the take home is about 1.5 lakhs, maybe more. Expenses including EMI is about 90,000. Have some saving in mutual funds, different type of mutual fund houses, different schemes. They are being held as direct and growth. What are the differences? We will consider that later on. Purchase through an app that does not charge commission from them, but then purchasing through all these have got their own pluses and minuses, which also I will cover at a later date. She also has got some bank FDs and cash and something more. I don't know the details. However, we will cover a lot of those as we go along so that our young, bright professionals, the future of India, can make best use of the money they are earning and saving. The banker is ICICI Bank. It doesn't make a difference. I'm just mentioning because some of the things may be easy in some bank, may not be easy in some other bank. But routine banking, by and large, is similar in all the larger banks. So the query was, please advise on a financial plan that I should do and that should make me survive comfortably for next 50, 60, 70 years. And there were a lot of other questions. Do I invest in property, stay in rent? How about, oh my God, I'm sorry for the mistake. It is gold, not God. I can't invest in God. How about gold? It is going up so fast and other questions. जब ये गोल्ड की बात होती है तो incidentally some fun facts. India has got the largest amount of gold in the world, but it is not with the government of India, it is with the public people. Government of India, which is Reserve Bank of India, has got about 870 or 880 tons of gold. The largest amount of gold which any government has is with the US government, which is about 8,800 tons. But as a country which has the largest amount of gold is India, most of it is held by our ladies and a family hold, and हम लोग मंदिरों में जो दान दे आते हैं वो वाला. It is estimated that India as a whole has got over 40,000 tons of gold. I don't know. हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे वो प्योरली म्यूचुअल फंड्स की करेंगे. We will not talk about a lot of other investment opportunities. And the reason we are going to talk about mutual fund because the query which my friend's daughter was mainly on mutual fund. I'm also running another channel on WhatsApp and making videos on a weekly basis on YouTube on understanding investment, where a lot of different type of investments are being considered and a lot of different parameters on how to look at investment are also being done. क्वेश्चन ये उठता है कि भैया आपके पास ऐसी कौन सी बड़ी खास चीज हो गई है कि जो आप ये कर रहे हैं. नंबर वन, कोई खास चीज नहीं हुई है. मेरा इन्वेस्टमेंट के ऊपर में इंटरेस्ट पिछले 51 years से है. So it is only that experience which I am bringing on the table. I am not selling any company
any stockbroker or anyone. I am a mutual fund distributor as approved by SEBI, and I'm not selling my services also. That services of mutual fund as a distributor is purely for my very close friends and relatives. आई एम नॉट अ पर्सन जो कि ओपनली मार्केट में बेच रहे हैं, जो कुछ मित्र आ जाते हैं उनके साथ बात करके वॉट एवर बेस्ट आई कैन डू आई डू. चलिए, सो assuming hopefully you accept me as a person who understands a little bit of investments. So many वो क्वेश्चन ये उठ जाता है कि what is a mutual fund? So mutual fund is a collection of many shares, and ये सारे शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से ही खरीदे जाते हैं. सो रिलायंस इज ऑल्सो अ रिलायंस वेदर इट इज इन स्कीम ए बी सी डी और म्यूचुअल फंड हाउस 1 2 3 4. रिलायंस चेंज नहीं होगा, रिलायंस वही पे. एज रिलायंस विल रिमेन द सेम, सो विल बी एयरटेल, सिबार और मिश्रा धातु. सो शेयर्स विल नॉट चेंज. म्यूचुअल फंड के अंदर में जो अलग स्कीम्स हैं उसके अंदर में वही शेयर्स किस तरह से रहेंगे वो देखा जाता है और उसी पे अच्छी अच्छी चीजें होती हैं. एनी म्यूचुअल फंड स्कीम इज डिसाइडेड बाय द इन्वेस्टमेंट मैनेजर. एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर डिसाइड करता है, एंड क्वेश्चन ये होता है कि हाउ मच डू यू ट्रस्ट द इन्वेस्टमेंट मैनेजर. इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी डोंट नो द इन्वेस्टमेंट मैनेजर, बट वी स्टिल की पब्लिक कह रही है तो वो अच्छा ही होगा, इस तरह से करके चलते हैं. अब अगर हम म्यूचुअल फंड स्कीम्स को देखें, सो बहुत ही एग्जॉटिक नेम्स पड़े हुए होते हैं. क्वांट्रा फंड, आर्बिटाज फंड, मल्टी एसेट, थीमेटिक, मोमेंटम, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, ग्रीन चिप, कलर चिप, फॉरवर्ड लुकिंग, इनोवेशन, डिजाइन, फोकस, हिडन जेम्स, आई डोंट नो व्हाट ऑल थिंग्स. सारे के सारे सिर्फ नाम का अंतर है, शेयर्स वही है, अलग अलग तरह से उनको पैक किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, पराठा, पराठा, परोठ, भरवा पराठा, आलू पराठा, प्याज पराठा, पनीर पराठा, कीमा पराठा. नेम एनीथिंग, इट इज अ पराठा. इंडियन ब्रेड सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है पूरे इंडिया में वो पराठा है. कहीं भी मिल जाता है और सब जगह पे मिल, लेकिन उस पराठे के अंदर में बनता वो आटा और मैदे से मिक्स करके ही है. इतने कॉम्बिनेशन है उसके कि जितने मतलब सोचा नहीं जा सकता. यम्मी टेस्टी, देखते ही मेरे को भी यम्मी टेस्टी लग रहा है. तो म्यूचुअल फंड भी इसी तरीके से है. सब में लगेगा आटा मैदा, भरवा बनेगा गरम करके, चाहे तंदूर में बने. वैसे मुझे समझ में नहीं आया गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने तंदूर क्यों बैन कर दिया पोल्यूशन के लिए. साला एक तरफ तो दिवाली के अंदर में पटाखे बैन हो जाते हैं, बट यूक्रेन युद्ध के अंदर में पोल्यूशन साफ हो रहा है. आई एम बीइंग sarcastic, आई नो, बट कांट हेल्प इट. सो तंदूर भी बैन कर दिया. कुछ दिन बाद बोल देंगे घर में गैस मत चलाना, पोल्यूशन हो रहा है. हे भगवान. चलिए खैर, दैट इज ऑल बीइंग ऑन द sarcastic साइड, प्लीज इग्नोर. सो लाइक पराठे में इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं, बनाने का तरीका वही होता है. म्यूचुअल फंड में नाम कोई भी हो, शेयर्स वही हैं, सिर्फ अलग अलग रेशियो में और अलग अलग तरह से पकाए जाते. सो जस्ट बी careful and understanding on this part of it. I recommend index funds through and through. An index fund was made by Willy Vogel, excuse me, by Vanguard Index Funds in 1940s. He started off because he wanted his grandmother, उनका जो पैसा था उसको कैसे यूज करा जाए. पैसा बहुत नहीं था, स्टॉक मार्केट अच्छे रिटर्न्स दे रहा था, तो उसको करने के लिए उसने क्या किया, इंडेक्स फंड बनाए जिसमें पैसा सिर्फ इंडेक्स में ही इन्वेस्ट होगा. द index as we know it now was started by Dow Jones. It is called Dow Jones Industrial Index.
It was started approximately 1896-97. I'm not remembering it. डो जोन्स जो है ये नाम कहाँ से आया? Wall Street Journal is still a very reputed and respected newspaper in New York for the stock market, like Economic Times, Financial Express, and so others in India. उसके ओनर्स मिस्टर डो और उनके जनरल मैनेजर मिस्टर जोन्स दोनों ने मिलके न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट के 30 शेयर्स का एक वेटेड इंडेक्स निकाला, which was called Dow Jones Index from 1897 around that time. तो ये वही इंडेक्स था. तो म्यूचुअल फंड के अंदर में तो 1920 से शुरू हो गया था यूएसए में, बट इंडेक्स फंड स्टार्टेड इन 1940s by Billy Vogel and Vanguard. They are the largest fund house in the world. Now, what is an index? Index is a weighted average of shares, and shares which are more important to the economy are given a larger weightage. When you make इंडेक्स के अंदर में हर तरह की इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करा जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि इंडेक्स शुड रिप्रेजेंट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. सो फॉर एग्जांपल, किसी टाइम में जेके इंडस्ट्रीज का शेयर इंडियन इंडेक्स में होता था, अब नहीं है. इन्फोसिस नहीं होता था और अब है. क्या अंतर है? उस टाइम में जेके के जो एम्पायर हैं ऑन clothing or wool and so on, they were more important in the economy. आईटी का नाम ही नहीं था. और आज की डेट में उसका एज अ इकोनॉमिक परसेंटेज इज डिफरेंट, but IT is far more. We have IT as one of the large employers in the country, huge exports. So IT को इंट्रोड्यूस कर गया इंडेक्स में और वो निकल गए. So how much importance is given? It changes every quarter. What all other factors are there? They are like size of company, how transparent they are, how much relevant, and so on and so forth. ये सारे सिलेक्शन के जो फंडामेंटल हैं, ये NSE की वेबसाइट पे है. One can go and have a look at. It is quite an interesting read for people who are more technical or who are more mathematical. But for the normal person, let us say, there is a lot of experienced people who sit down and they review the total stock market, and उसमें से वो चुनते हैं कि कितने लोगों को लेके और हमें शेयर्स बनाने. As of this moment, the total number of shares traded in, sorry, not traded, which are listed in the market for trading, मतलब वो हैं, ट्रेड हो या ना हो फिर भी हैं, ट्रेड करने के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, is close to 7,000 shares. How is 7,000 shares as compared to the world market? बहुत ज्यादा अंतर नहीं है. वर्ल्ड के जो बड़े बड़े स्टॉक मार्केट हैं वो 9,000 तक गए हुए. Largest one, of course, is New York Stock. Worldwide, pension funds invest in index funds or index shares by more than 90%. इंडिया के अंदर में भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड का कुछ पोर्शन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ किया गया है, और ये पैसा ज्यादातर या तो निफ्टी 50, निफ्टी 500 या कुछ डेट इंडेक्स फंड्स में ही डाला गया हो. ज्यादातर पैसा एसबीआई इंडेक्स फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट करा गया है. एसबीआई as a fund house is the largest fund house in India, followed by ICICI Prudential Fund House. Index is also used as a serious indicator of the direction of economy is going. So if when we say stock market नीचे है, which means the economy is going down. जब हम कहते हैं इंडेक्स ऊपर है और भाग रहा है, which also means economy up है और भाग रही है. There is an interesting indicator called the Warren Buffett indicator, where he realized that the total market capitalization is equal to approximately the GDP of the country, which means अगर हम सारे शेयर ले लें, उनको
के प्राइस से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें, दैट इज कॉल्ड द मार्केट कैपिटलाइजेशन। वो मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू जीडीपी के बराबर अप्रोक्सीमेटली होती है। तो अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो ये भी ग्रो करेगा, विच मीन्स प्राइसेस ऑफ द शेयर्स विल ग्रो, विच मीन्स इंडेक्स विल ग्रो। सारे इन्वेस्टर्स, वर्ल्ड के भयंकर बड़े बड़े फंड हाउसेस, governments, they all keep a very close tab of different stock market indicators worldwide and see कहाँ इन्वेस्ट करना है, उस कंट्री की इकोनॉमी कैसे चल रही है. So index is a very serious indicator. Here also personally I would rather bet on the intelligence of a few experienced person and a transparent process than one or two people sitting on the top floor driving BMWs. मुझे बड़ा डर लगता है कि जब किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के हाथ में इतना पैसा मिल जाए कि वो मार्केट को इन्फ्लुएंस करे, प्राइसेस के ऊपर में कर सके. Whereas an index which is made by several people, उसके अंदर मैनिपुलेशन नहीं हो सकता. इंडेक्स के अंदर में शेयर ऐड होते हैं, डिलीट होते हैं. The share which have been in the index for the longest period of time in the world is General Electric. General Electric was the share which was a company which was made by Thomas Edison. वही थॉमस एडिसन जो बल्ब बनाया था वही वाला, लेकिन वो भी सिर्फ 75 साल ही इंडेक्स, डो जोन इंडेक्स में रह पाई. When they started losing relevances, they were also removed from the index. Incidentally, आज की एनर्जी सिनेरियो में GE is not very well known for their wind turbine or for their solar. So their relevance started going down, though GE was very important company जब वो turbines to manufacture electricity and to trains and heavy engineering के ऊपर बहुत ज्यादा थी. How does index fund behave? इंडेक्स फंड के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये सबसे कम खर्चा लगता है. क्यों? क्योंकि इसमें रिसर्च वर्क तो होती नहीं. जो भी चीज है, इंडेक्स है, उसी के हिसाब से इसको खरीद के और बेच लिया. A clerk can run this because everything is on the Excel sheet. म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को भी इसमें मिनिमम कमीशन मिलता है. ये जो बड़े बड़े एग्जॉटिक नेम वाले हैं, इसमें कमीशन गोज अप टू 3% ऑफ योर टोटल फंड every year to the mutual fund distributor, whereas index fund में it is only 0.15%. अल्टीमेटली ये पैसा आपके ही जो किटी है उसी में से निकलता है, उसी से निकाल के सब करने के बाद NAV बनाते हैं. So if you look into the returns on a long term basis, it has been shown that the index fund returns are the best returns. So that is one. The second is again cost of running the mutual fund. It ranges, the lowest that I know of is Navi, Nifty 50 fund. I don't know if they're still running, which is at 0.06%, to as high as 3.5% in some of the fund where they call it very exotic names. और मैं जहाँ 3.5% करता हूँ तो मैं उसको देखता ही नहीं, क्योंकि 3.5% of my money I don't give it to a fund manager कि शेयर खरीदना बेचने में और अपनी BMW मेरे पैसे से चलाएगा. बढ़िया आदमी हो, पैसा कंजूसी पे रखता. Most popular and least risk of the index is of index of 500 shares. Now this has been proven, known, said by all the legendary large investors of the world, including Warren Buffett. The popular ones are NSE 500, BSE 500, S&P 500 of USA. Again, these are shares are fixed by experts, and all the mutual fund houses जो कि कहते हैं कि मेरा NSE 500 फंड है, इंडेक्स फंड, तो सेम शेयर सेम रेशियो में ही लेंगे. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसका कौन सा कब ले लीजिए, सब चीज के अंदर रिटर्न सिमिलर है. And a Nifty 500 index mutual fund will give approximately
99.7% similar return by any mutual fund. We will also talk later about which fund house is better, why it is better, and a lot of other factors. So the last one here is of last about 1200 trading days, Nifty 500 index कैसे चला है. So you can see the trend line which is going up and how on a daily basis ये ऊपर नीचे तूफान मचा है. We can make money on this daily fluctuation. But if we don't do anything and just stay put and stay invested, we still get a increase in the value of our stock, of our index. It is considered that India is going to become the second largest or the largest economy, depending on which side of the Modi Bhagat or India Bhagat you are. So our market is going to go up. We'll talk a lot more about that. At this point, it is only this much. I'm also going to put up the what you call links to my two WhatsApp channels. One is Understanding Investment, there is Investments. So if anybody is interested, please do join. I do not recommend any stockbroker. I will recommend some mutual fund houses and my फटे हुए रिकॉर्ड की तरह मेरी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस होती है निफ्टी 500 इंडेक्स फंड. थैंक यू. मोर लेटर.